Hello everyone. So in this lecture we will be discussing the presiding officers, and now we will be discussing articles, article 89 to 98. Presiding officers. Presiding officers, this is a general term. This is a general term or a term which is used loosely. Presiding officers are officially called as officers of parliament. Officers of parliament. सो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को जो ऑफिशियल का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ या तो कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है या किसी रूल्स में गिवन है या सुप्रीम कोर्ट की किसी जजमेंट में गिवन है, उन अगर कहीं इन तीनों में से किसी चीज़ में गिवन है सो वी विल कॉल इट ऑफिशियल, कि वो ऑफिशियल सोर्स है हमारा. ठीक है. सो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को ऑफिशियली हम कहते हैं ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट. ठीक. एंड जनरली जनरल टर्म्स में कहते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स. ठीक. सो हु आर द प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स? हु आर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स? लोकसभा में प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कौन होते हैं? ठीक है. आई विल स्टार्ट विद लोकसभा. सो इन लोकसभा द प्रिजाइडिंग ऑफिसर इज स्पीकर. देन वी ऑल्सो हैव डेप्यूटी स्पीकर. These both are given in the constitution. They are given in constitution. So what are the presiding officers for Lok Sabha? We have speaker, we have deputy speaker, plus we also have a panel of chairpersons. Panel of chairpersons which have 10 members. 10 members. And source क्या है इसका? It is mentioned in rules of Lok Sabha. Mentioned in rules of Lok Sabha. So these 12 persons can sit on the chair of speaker. They can preside in Lok Sabha. ठीक है. These 2 plus these 10. So 12. So these are the total number of presiding officers for Lok Sabha. इन 12 लोगों में से कोई एक जो है he will sit on the chair of the presiding officer of Lok Sabha. ठीक है. Moving ahead with Rajya Sabha. For Rajya Sabha, we have chairman plus deputy chairman plus panel of vice chairpersons. Panel of vice chairpersons which have 6 members. It is mentioned in Rajya Sabha rules. Mentioned in Rajya Sabha rules. So these 2 people plus these 6, so total these 8 people. Out of these 8, the one person will sit on the chair of the chairman of Rajya Sabha. He will preside in the Rajya Sabha. Okay. Only these 8 persons can sit on the chair of the chairman of Rajya Sabha. Moving ahead, write some notes. The term deputy does not imply that the deputy speaker and deputy chairman are subordinate to the speaker or the chairman. ठीक है. अगर डेप्यूटी स्पीकर और डेप्यूटी चेयरमैन के सामने प्रीफिक्स डेप्यूटी लगा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि एक सेकंड स्पीकर एंड चेयरमैन इनके सामने ये प्रीफिक्स लगा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि सबॉर्डिनेट है स्पीकर और चेयरमैन से. ठीक. इट ओनली इम्प्लाइज दैट दे शॉल परफॉर्म द बिजनेस इफ द स्पीकर और द चेयरमैन कैन नॉट. ठीक. इनके सामने डेप्यूटी लगा हुआ है एज अ प्रीफिक्स, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सबॉर्डिनेट है टू स्पीकर एंड द चेयरमैन. बस ये इसलिए लगा हुआ है दैट दे शॉल परफॉर्म द बिजनेस व्हेन द स्पीकर और द चेयरमैन कैन नॉट. किसी भी रीजन से अगर स्पीकर और चेयरमैन अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहे, उस केस में डेप्यूटी स्पीकर या डेप्यूटी चेयरमैन का फंक्शन परफॉर्म करेंगे. सिर्फ इसीलिए ये प्रीफिक्स यूज हो रखा है यहाँ पर, और बाकी सबॉर्डिनेट नहीं है उनसे. ठीक है. आई रिपीट, द टर्म डेप्यूटी डज नॉट इम्प्लाई दैट द डेप्यूटी स्पीकर एंड डेप्यूटी चेयरमैन आर सबॉर्डिनेट टू द स्पीकर और द चेयरमैन. इट ओनली इम्प्लाइज दैट दे शॉल परफॉर्म द बिजनेस इफ द स्पीकर और द चेयरमैन कैन नॉट. Write one more point. Write in bracket. Deputy speaker and deputy chairman are answerable to the house. They are answerable to the house. Okay. Write a note. All presiding officers are member of the house except one. And who is that? Except chairman of Council of States. Council of States, or in bracket you can also write Rajya Sabha. The chairman of Rajya Sabha is not the member of the house.
क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। एक्स ऑफिशियो का क्या मतलब है कि क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट हैं इसलिए वो चेयरमैन है राज्यसभा के, ठीक है, ये मतलब होता है एक्स ऑफिशियो का कि क्योंकि बिकॉज ही होल्ड दिस पोस्ट एंड फॉर द रीजन ही होल्ड दिस पोस्ट ही विल बी द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ओके, आई होप यू आर गेटिंग क्लियर विद द कॉन्सेप्ट्स। सो मैं आपको एक टेबल दूंगा अब, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, एवरी ईयर यू विल फाइंड क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टेबल इन द प्रीलिम्स। सो ड्रॉ टेबल, राइट स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, chairman and deputy chairman. We will compare all these four together. We will draw comparison. It's a very, very important table. Okay. So first we will see whether these four are member of the house or not. Member of the house. The first thing we are seeing whether they are the member of the house or not. Now we will simultaneously compare all the four together. ठीक है. So क्या speaker is the member of the house? Yes. Speaker is the member of the Lok Sabha. Deputy speaker is the member of the house? Yes. Chairman is not the member of the house. जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, Vice President is the ex officio chairman of the Rajya Sabha. So he is not the member of the house. He is Vice President of India. So sorry. So chairman is not the member of the house, but deputy chairman is the member of the house. Okay. Now we will discuss about oath. So speaker do not have a separate oath. No separate oath. No separate oath. No separate oath. No separate oath. But speaker takes oaths as member of parliament. Under which article? Article 99 talks about it. क्योंकि स्पीकर तब बने जब पहले वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, सो वो ओथ लेते हैं बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वो एज ए स्पीकर कोई ओथ होती नहीं है कि स्पीकर के लिए कोई अलग से ओथ होती हो। जस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब बनते हैं तभी स्पीकर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की ओथ ली जाती है एंड फिर उन्हीं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से कोई एक चुन करके स्पीकर बन जाता है। तो स्पीकर के लिए कोई अलग से ओथ नहीं होती, ऐसे डेप्यूटी स्पीकर के लिए भी कोई अलग से ओथ नहीं होती। ये भी टेक्स ओथ्स एज member of parliament. The article is 99. Takes oaths as vice president. He also takes oath as member of parliament and the article is 99. So सिर्फ चेयरमैन जो है बीइंग, जैसे मैंने आपको बताया, वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, सो वो ओथ लेते हैं बीइंग अ वाइस प्रेसिडेंट, बाकी सब एज एन एमपी ही ओथ लेते हैं। मूविंग अहेड, let me draw the table first, otherwise it will get short. So yes, now whether the presiding officers are elected or not, we will see how they are elected. How they are elected, we will see now that Speaker of Lok Sabha is elected by members of the respective house, by members of Lok Sabha only. Deputy Speaker is also elected by members of Lok Sabha only, and Deputy Chairman is also elected by members of Rajya Sabha only. But chairman is elected as vice president by members of both the houses, that is Lok Sabha plus Rajya Sabha. Okay, now we will compare vacation of seat. Vacation of seat. How vacancy will take place in the case of speaker?
इफ नॉट एमपी, उसके लिए कितने सर्कमस्टेंसेस है? वी हैव 9 सर्कमस्टेंसेस फॉर दैट। जैसे कि मैंने आपको बताया, स्पीकर बनने से पहले ही इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पहले वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने फिर स्पीकर बने। सो बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर किसी भी रीजन से वैकेंसी आ जाती है उनकी सीट पे, इन दैट केस ही विल लीड टू द वैकेंसी टू द स्पीकर ऑफिस एज वेल। सो अगर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहेंगे तो वो स्पीकर कैसे बने रहेंगे? ठीक है। सो इफ ही इज नॉट एमपी अंडर 9 सर्कमस्टेंसेस देन इट विल लीड टू द वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ स्पीकर। सेकंड कंडीशन, इफ रिजाइन, एंड रिजाइन किसको करेंगे? टू डेप्यूटी स्पीकर। एंड थर्ड इज रिमूवल, removal as speaker, but he will remain member of parliament if he is removed as a speaker. ठीक, then what about deputy speaker? For deputy speaker we have the same conditions. If not MP under 9 circumstances. Second case, if he resigns, deputy speaker को resign करते हैं, deputy speaker resigns to speaker. The third, removal as डेप्यूटी स्पीकर। यहाँ पर भी सेम है, इफ नॉट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देन इट विल लीड टू द वैकेंसी द ऑफिस ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन। सेकंड, इफ रिजाइंस, डेप्यूटी चेयरमैन इसको रिजाइन करेंगे, ही विल रिजाइंस टू चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। एंड द थर्ड इज रिमूवल। नाउ वी विल सी what will lead to the vacancy in the office of chairman. If he vacates as vice president, and how, under how many circumstances there is a vacancy? 5 circumstances leads to the vacancy in the office of vice president. Okay, now fifth we'll see removal. How can be a speaker in the Lok Sabha can be removed? It requires effective majority in Lok Sabha. By effective majority in Lok Sabha, the speaker can be removed. Same goes for deputy speaker. Requires effective majority in Lok Sabha. Requires effective majority in the respective house, that is Rajya Sabha. And what about chairman? He is removed as vice president, and both the houses participates. Lok Sabha and Rajya Sabha. Lok Sabha needs simple majority and Rajya Sabha needs effective majority. By this, chairman can be removed. Now we will see the term. Number 6 is term. The speaker does not vacate the office at the dissolution of Lok Sabha. He stays in the office until immediately the first sitting of the newly constituted house. So despite there being no Lok Sabha, speaker remains in the office. So speaker तब तक बने रहते हैं, मान लो लोकसभा डिसॉल्व भी हो गई, उसके बाद भी जब तक जो नई लोकसभा का गठन होकर के आएगा उसकी फर्स्ट सिटिंग तक ही विल रिमेन इन द ऑफिस. ओके, टिल फर्स्ट सिटिंग ऑफ न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड हाउस, तब तक स्पीकर विल रिमेन इन द ऑफिस. डेप्यूटी स्पीकर एज अ टर्म, he has a term as an member of parliament, that is 5 years. Terms as member of parliament, that is 6 years. क्योंकि राज्यसभा में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो टर्म होती है वो 6 years होती है. सो डेप्यूटी चेयरमैन की टर्म भी, बीइंग ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बीइंग एमपी इन राज्यसभा, he will have a term of 6 years. He or she will have a term of 6 years. And what about chairman of Rajya Sabha? He has a term as vice president, and vice president has got term of 5 years. So this is the major comparison between all these 4 presiding officers, that is speaker, deputy speaker, chairman and deputy chairman. बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है.
आप अच्छे से इसको मेमोराइज कर लोगे तो इससे ज़रूर क्वेश्चन सोल्व होगा. राइट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स. Important facts. Number 1. As per the rules of Lok Sabha, चलो मैं लिख देता हूँ. As per the rules of Lok Sabha, the date of election of speaker is decided by whom? The date of election of speaker is decided by president. Who decide the date of the election of a speaker? It is decided by the president. And date of election of deputy speaker. Who will decide the date of election of deputy speaker? It will be decided by speaker. Who will decide? Speaker will decide the date of election of deputy speaker. Okay. Write one more point. Right, point number 2. As a convention, it's a convention. कहीं किसी रूल्स में मेंशन नहीं है, बट एज अ जनरल कन्वेंशन द स्पीकर इज फ्रॉम रूलिंग पार्टी और ग्रुप ऑफ रूलिंग पार्टीज, दैट इज कोalition, or group of ruling parties. And what about deputy speaker? Deputy speaker is from opposition. It's a general convention. कहीं पे मेंशन नहीं है, बट एज अ कन्वेंशन इंडिया में स्पीकर रूलिंग पार्टी से ही होता है एंड डेप्यूटी स्पीकर फ्रॉम द ऑपोजिशन. ओके, so that's all for this presiding officers. Thank you so much. Signing off.